We are starting the chapter grammar. The first chapter is the sentence. What is sentence? A group of words which make a complete sense is called sentence. A group of words which make a complete sense is called sentence. For example, little Jack Horner sat in a corner. Like this combination of words is called sentence. Now we move to the next topic, the kinds of sentence in this chapter. Kinds of sentence. The first kind is declarative or assertive sentence. What is declarative or assertive sentence? A sentence that make a statement or assertion is called declarative or assertive sentence. For example, Humpty Dumpty sat on a wall. What is declarative sentence? A sentence that make a statement or assertion is called declarative or assertive sentence. For example, Humpty Dumpty sat on a wall. Statement. These are statement. और assertion मतलब किसी को बता रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल. डिक्लेरेशन कर रहे हैं, असर्टमेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन वॉल. दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस. Second is interrogative sentence. What is interrogative sentence? A sentence that asks a question is called interrogative sentence. What is a sentence that asks a question is called interrogative sentence. For example, where do you live? तुम कहाँ रहते हो? किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. किसी को हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, where are you going? This is interrogative sentence. So, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. For example, where do you live? Is an interrogative sentence. Next is third is imperative sentence. What is imperative sentence? A sentence that expresses a command or entity or request is called imperative sentence. What is a sentence that expresses a command or entity or any request is called imperative sentence. For example, be quiet. सब चुप रहो. सबको आदेश दे रहे, कमांड कर रहे हैं, वो क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा. Have mercy upon us. Have mercy upon us, God. ये क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से. ये क्या कहलाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा. So this is imperative sentence. A sentence that expresses a command or entity or any request is called imperative sentence. For example, be quiet. Have mercy upon us. Next is exclamatory sentence. Next is exclamatory sentence. A sentence that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence. कोई भी सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है, उस वर्ड्स के साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेंटेन कर रहा है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ एंड होता है. व्हाट इज एक्सक्लेमेशन मार्क्स? ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स. ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है. तो फॉर एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज, व्हाट अ सेम. ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे हैं उस जगह के लिए, उस वर्ड के लिए. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, a sentence that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence, always end with exclamation mark. For example, how cold the night is, what a shame. So here is the end of the sentence chapter. Now we can learn the next chapter, subject and predicate. Okay, thank you guys. Jai Hind, bye bye, good night.